Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Yeah, ma'am. I'm sorry because there were some technical difficulties in the network. Okay, so let's quickly start up with the rest part. So, as usual, let me brief. Today, we would be discussing the last 15 questions of paper 1, and this set belongs to management, okay, stream, which was held on 39/2020. So it's a detailed analysis with explanation. So already part 1, part 2, and this is part 3. Okay, 50 questions have been divided into 3 categories. Videos are uploaded in YouTube, so you can go back and check. So let us start with the 36th question without wasting any time. Match list 1 with list 2. दोनों लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. एक में हमको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है और दूसरे में डिस्क्रिप्शन. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में डायडिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. डिस्क्रिप्शन में मैसेजेस फ्लो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ interdependent relationships, uses a medium to reach a large anonymous audience, provides equal opportunity to communicate, occurs within a formal and structured setting. ठीक है, तो इनमें से हमको मैच करना है. The correct options are given below, so we have to choose the correct option. So you can start from mass communication. Mass communication was taught. So find out and then give the answer. Okay, Prakriti. Give the answer. Okay, Anusha, Preeti, Krishna. Good, please answer. Okay. So that, okay, fine. Let's just understand what is a dyadic communication. Okay. See, dyadic communication means which is held face to face. It's a verbal communication, no written communication. जो face to face होती है. इसका मतलब क्या है? Inter relationship between the two. Okay. But in practice, जब हम practice में इसका देखते हैं, तो this relationship refer to dialogic relations or face-to-face verbal communication between two persons. बहुत सी चीजों के ऊपर, जैसे ये म्यूचुअल आइडियाज हो गया, बिहेवियर हो गया, थॉट्स हो गया, परसेप्शंस हो गया, डिसलाइक्स लाइक्स हो गया. So that is known as verbal communication, dyadic communication. It's a type of verbal communication. Okay, we got an answer from Shilpa Shaini also. Public communication का मतलब क्या है? Happens when individuals and groups engage in dialogue in the public sphere. Public में जब लोग बात करते हैं, dialogue में आ जाते हैं, in order to deliver a message to a specific audience. Public communication means a communication made in identical form to multiple persons. ठीक है, एक साथ बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है टू द वर्ल्ड एट लार्ज, बाय टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, मोशन पिक्चर हो गया, पैम्पलेट, मास मेलिंग, एनीथिंग यू कैन से. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल सेटिंग होती है उस पे. मास ऑडियंस को अगर हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज अ mass communication. Okay, so seeing all these options, the correct option is 2.
A का 3 है यहाँ पे. Dyadic communication provides equal opportunity to communicate because it's in face-to-face talking. B is 4, public communication. Next is C is 1, messages flow through a network of interdependent relationships. And mass communication, obviously, it uses a medium to reach a large anonymous audience. Okay, so the answer to this question is 2. Yes, Shilpa, you are absolutely correct. Others, did you understand? Okay. So let us quickly move for 37th question. Okay, the most beautiful questions or most wanted questions for NET. Statement 1, there are two statements. Yoga is the union of body with the mind and of the mind with the soul. And statement 2, both value education and environmental education can be integral to yoga programs which are conducted at the college or school level. Okay. Now choose the correct answer. Whether both the statements are correct, whether one is correct, two is incorrect, and one is incorrect, two is incorrect, and both are incorrect. Which is correct? Just read the sentences and try to answer. Okay, we got an answer from Shrodhanjali. Okay, we got answer from Shilpa. Fine. Others, please answer. I'm still waiting. Madhushri, please try to answer. No, Jayashri, please try to answer. Swati, answer please. Sona, please answer. Shweta, you joined now, but try to answer the question. Ambika, please answer. Okay, Ambika, that's good. Shweta, okay. See, here in this question, yoga is the union of body with the mind and of the mind with the soul. This is absolutely correct. Okay, it's a union, means together. The mind would be with the body, and the body, then the mind would be with the soul also. So it's a union of everything, body, mind, and soul. And whenever we are going for any yoga programs which are conducted at the school level or college level, then definitely both value education and environmental education are to be integral, can be integral, very, very important. So in this question, the correct option is 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Okay, all of you.
Let's move to question number 38. In the university education system as prevalent now, whatever university education system that you are looking now, which of the following bodies or committees looks after formal approval of curriculum and courses of study? ठीक है, आज के अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो जो भी नया कोर्स, सपोज अब मेरा यूनिवर्सिटी एक कोर्स लॉन्च करना चाहता है, so we have to take the formal approval of a body in the university itself, jurisdiction itself. So which is that body? Is it university executive council? Is it academic council? कहीं कहीं पे executive council बोला जाता है, board of management बोला जाता है, कहीं कहीं पे syndicate भी बोला जाता है. There are various terms. Syndicate, okay, if you have heard this term. And next is your academic council, next is your board of studies, and last है आपका university court. These three, okay. See, board of studies जो होता है आपके डिपार्टमेंट में ही होती है, एंड दो तीन फैकल्टीज इंटरनल एंड कुछ फैकल्टीज एक्सटर्नल को लाके हर ईयर में हम सेमेस्टर्स को, like we used to certify that we are going to teach this particular syllabus to the students this year. Each year it happens, board of studies, okay, ये डिपार्टमेंट लेवल में होती है. एकेडमिक काउंसिल पूरे यूनिवर्सिटी लेवल में होती है, रिलेटेड टू पढ़ाई एवरीथिंग. एंड योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पे सब कुछ है, पढ़ाई के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सब कुछ है. सो नाउ चूज योर ऑप्शंस. Okay. Okay. See, Anusha, why you said sorry, then it will be one. I clearly said now. Academic council is related to courses of study and curriculum. Okay, university executive council is related to everything. Suppose our employee's salary would be upgraded, or teacher's salary would be degraded, or they would be going for certain refresh seminars, conferences, any budget discussion, any expansion. So everything, be it be academics, be it be administrative, everything is discussed in executive council. In academic council, the full final sanction of study matters only. In this question, what is given? Formal approval of curriculum and courses of study. So final formal approval is given by the academic council. And board of studies, normally it is done for the syllabus, okay, not for courses of study. It is done for the syllabus. University court has obviously no relevance in this particular question. So the answer to this question is answer number 2, option number 2. Okay, fine. So let's move to question number 39. अगेन देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, ये कितने बार आ चुका है नेट पे, मतलब ये फॉर्मेट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. नेट कंफ्यूज करने के लिए माहिर है. ALU stands for अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आया है आपका ICT चैप्टर से. एंड UPS stands for यूनिफॉर्म पावर सोर्स. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है, एक करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है, एक इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है. So which is correct? Which code you are going to select? Which option you are going to select here?
Okay, Preeti, Prakriti, good. Okay, Shilpa, that's good. Ambika, good. Anusha, Shraddhanjali, absolutely, like, good. See, here, people often get confused between UPS. They don't like normally remember the full form. UPS is uninterruptible power supply, or you can say uninterruptible power source. It is an electrical apparatus that provides emergency power to a load when the input power source or main power fails. आपके कंप्यूटर के साइड पे एक यूपीएस रखा गया होगा, बाई चांस लाइन या पावर कट जाता है तो ये बैकअप देता है, 10-15 मिनट तक तो बैकअप देता है. यस, सो not, it is not uniform power source, it is uninterrupted power source or uninterrupted power supply. आप इसको कुछ भी बोल सकते हो. सो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही, बट स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है. ओके, this one everyone got correct. Good, Shilpa, that you said the full form. Let's move to question number 40. Which of the following is not one of the missions under National Action Plan on Climate Change? ये तो पढ़ाया गया है आप लोगों को, जो लोग क्लास किए हैं. ओके, क्लाइमेट चेंज, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. जो लोग क्लास किए हैं, प्लीज रिकॉल द 8 मिशंस दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास. वहां से आपको आंसर पता चलेगा इसका. Is it National Water Mission? Is it National Mission on Energy Efficiency Improvement? Is it Green India Mission? Or is it National Mission on Solid Waste Management? Okay, Shraddhanjali, got your answer? Please give your answers. Okay, take your time. इनमें से कौन सा हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर नहीं आता है? 8 मिशंस हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्लास में. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत बार आप लोग के साथ रिवीजन भी किया गया था. सो प्लीज ट्राई टू आंसर. ओके, प्रीति एंड लिप्सा. ओके, अनुषा, गुड. शिल्पा, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. What about others? Shweta, give your answer. Okay, Shweta gave. Jayashri, give your answer. Ambika, Sona, please give your answers. Okay, before I'll say the answer, let us understand something about this National Action Plan on Climate Change, NAPCC. यहाँ पे 8 मिशंस हैं, ठीक है. पहला मिशन है सोलर मिशन, purely promoting the development and use of solar energy for power generation and other uses. Purely हम लोग solar energy के ऊपर फोकस करते हैं ताकि power generation ठीक ठाक हो पाए. ओके, सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम फॉसिल बेस्ड एनर्जी ऑप्शंस कैसे निकाल पाए. नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. यहाँ पे क्या करते हैं? NAPCC recommends mandating specific energy consumption decrease. बहुत से लार्ज इंडस्ट्रीज में क्या होती है ना, बहुत एनर्जी कंजप्शन होती है. तो लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज में यहाँ पे उन लोगों को स्पेसिफिकली डिक्रीज करने के लिए बोला गया है. It has been it's a mandate that they have to decrease.
वाई? ताकि एनर्जी हमारा कुछ बच जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्रमोट करते हैं, एनएपीसीसी प्रमोट्स एनर्जी एफिशिएंसी एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग by extending the existing energy conservation building code। ठीक है, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल हैबिटेट मतलब वी आर प्लानिंग फॉर अ अर्बन पीपल और अर्बन ड्वेल कैसे परफेक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए भी वी हैव टू चेक अपॉन द पोल्यूशन एंड द एनर्जी पैरामीटर्स। सो द दिस पर्टिकुलर मिशन इज प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी as a core component। Okay, it also focuses on waste management, recycling, purchase of efficient vehicles, incentives। इसी के चलते ही हमारा pollution certificate mandatory बना है। ओके, गाड़ी हम जब चलाते हैं इट्स अ मैंडेट। नेक्स्ट है आपका नेशनल वाटर मिशन। यहाँ पे क्या है गोल, सेट अ 20% इंप्रूवमेंट इन वाटर यूज एफिशिएंसी। जितना भी हम वाटर यूज करते हैं आज के डेट पे, आप भारत में अगर देखोगे कितना दिक्कतें आती है वाटर को लेके। वी आर परचेजिंग वाटर, whereas it was not the scenario some 30-40 years back down the line sufficient water was available, but आज के डेट पे clean water, perfect water for use is not available, right? So national water mission came for that purpose। next है आपका national mission for sustaining the Himalayan ecosystem। यहाँ पे जो प्रिवेंट होती है ना आपके हिमालयन ग्लेशियर्स आज के डेट पे मेल्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर बिकॉज ऑफ दिस कोविड टाइम। एयर पॉल्यूशन अक्रॉस द यूनिवर्स हैज कम डाउन, बहुत कम हो गया है, जो नेक्स्ट 20 साल तक हमको चलाएगा आराम से। So in order to protect diversity and melting of Himalayan glaciers, ये मिशन आया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आपका ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन में अफॉरेस्टेशन, हम लोग आज के डेट पे फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं, डिफॉरेस्ट कर लेते हैं, ताकि क्यों, ताकि हम लोग वहां पे मकान वगैरह सब बना सके। बट ये जो मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, इट इज फोकसिंग ऑन द अफॉरेस्टेशन ऑफ अराउंड 6 million hectares of degraded forest lands। ठीक है, एंड फॉरेस्ट टेरिटरी को कैसे बढ़ाया जाए, 23% से लेके 33% ऑफ इंडिया टेरिटरी। नेक्स्ट मिशन है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को छोड़ के तो हम कुछ कर नहीं सकते। सो ये मिशन पे एनएपीसीसी ने क्या किया, इट एम्स टू सपोर्ट क्लाइमेट अडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लाइमेट को देख के क्लाइमेट अडेप्ट करनी चाहिए, लाइक एग्रीकल्चर क्लाइमेट को अडेप्ट करनी चाहिए। सो इट फोकस्ड ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, expansion of weather insurance mechanisms, agricultural practices, they focused on this। and the last is national mission on strategic knowledge for climate change। अगर आपको क्लाइमेट साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है, उसके इम्पैक्ट, उसके चैलेंजेस, ठीक है, आज के डेट पे हमारे डिफरेंट स्टेट्स में कहीं पे फ्लड आते हैं तो कहीं पे साइक्लोन्स आते हैं, राइट, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो अगर हमें क्लाइमेट के बारे में पता नहीं है तो हम कैसे चलाएंगे काम, नहीं, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो द प्लान दिस मिशन एनविजन्स और विजन्स अ न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड, ताकि हम क्लाइमेट को मॉडल कर सके, हम पहले से ही फोरकास्ट कर सके। ओके, so these are the 8 missions under NAPCC। so let me go back now, say your answer which is correct, which of the following is not one of the missions under NAPCC, National Action Plan on Climate Change? Yeah, okay, Prakriti? Okay, Anupama? Yes, the correct answer here is 4, National Mission on Solid Waste Management। तो 8वां मिशन क्या है, एक तो है सोलर मिशन, एक है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एक है आपका सस्टेनेबल हैबिटेट, एक है वाटर मिशन, एक है आपका सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, एक है आपका ग्रीन इंडिया मिशन, नेक्स्ट इज योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड द नेक्स्ट इज योर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज।
Okay. For the following research problem, which of the listed methods, research methods, will be most appropriate? इनमें से कौन से research problem में, okay, बहुत सारे research methods है आपके पास. This is coming from your teaching aptitude actually, and they have joined research and teaching aptitude here. एक sentence दिया गया है, school principals influence on trust. Perspectives of mothers children with disabilities. जिन बच्चों का कुछ disability है, चाहे mind हो, physical हो, कुछ भी हो, they are trusting on the particular school's principal. So this is a statement. School principals influence on trust. What are the perspectives of mothers children with disabilities? ये एक आपको टॉपिक दिया गया है. ये टॉपिक पे आप कौन सा, this is a research problem, okay? Normally the ladies, the children, the mothers whose kids are disabled, they don't trust people easily. Okay, so this is your research problem. Keeping this in mind, you have to find out which of the listed methods will be most appropriate. ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, फोकस ग्रुप बेस्ड मेथड होगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे होगा, या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा? Okay. Remember that we are talking about perspectives of mothers children with disabilities. We are not focusing on the normal kids here. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Okay. Please read the sentence again and again and then answer. Experimental method, experiment कर करके हम सीखते हैं चीजें. Focus group में we are focusing on that particular group. Focus करके we are going for a discussion method. Descriptive study, we are trying to understand the features, characteristics of that particular like problem or anything, whatever method we are choosing. Ex post facto मतलब आपका after the fact, एक बार काम हो चुका है, उसके बाद हम जाके रिसर्च करते हैं. Investigation starts after the fact has occurred without any interference from the researcher. Okay. So for the following research problem, which of the listed methods will be most appropriate? Okay, Shilpa. Prakati. Okay, Madhushri, Anupama. Preeti, Ambika. Anusha. Okay. Shweta, what's your answer? Shraddhanjali, okay. It is 200% focus group discussion, because here the key word is here. Mothers children with disabilities. Disabled students है ना, तो हमको यहाँ पे focus group करना है, right? So यहाँ पे normally ये जब research problem की बात आती है, you will find out कि कैसे trust build किया जा सकता है. School principals influence on trust. Okay, how much she can influence on this trust factor to the parents? Obviously through focus group discussion based method. Yes, option 2 correct. So Shilpa is the first one to give answer. Next is Prakriti and followed by others. Okay, let's move to question number 42.
See, one more statement-based questions. Statement 1. Volatile organic chemicals are contaminants more commonly found in groundwater than in surface water. Statement 2. Volatile organic chemicals are one of the criterion parameters to determine drinking water quality. इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? स्टेटमेंट बोथ करेक्ट है, बोथ गलत है, एक करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है, एक इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है. Annie, please rejoin once more. I think picture is clear. My YouTube students, can you see the picture perfectly? Okay. So before understanding more, what is volatile organic compounds or VOCs? These are emitted as gases from certain solid or liquid. Solid, कुछ solid या फिर liquid में से ये gases की तरह निकलते हैं. Okay? इनमें बहुत से chemicals होते हैं, कुछ short term, कुछ long term, लेकिन इनका बहुत adverse health effect आती है. Concentrations of many VOCs are consistently higher indoors, up to 10 times higher than outdoors. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इंडोर में 10 गुना ज्यादा होती हैं आउटडोर के हिसाब से. ग्राउंड वाटर क्या है? ये जो वाटर फाउंड होती है ना, जहां पे आप देखो कि जमीन में कुछ कुछ क्रैक्स हैं, बिल्डिंग में क्रैक्स हैं, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिखाई देगा, उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर. It's the water found underground in the cracks and spaces in soil, sand and rock. ये सारे stored होते हैं and बहुत ही slow चलते हैं through geologic formations of soil, sand and rocks which are called aquifers. So what is volatile organic compounds or chemicals? आपको पता चला? Now say, okay. Are contaminants more commonly found in groundwater than in surface water? Or is it one of the criterion parameters to determine drinking water quality? Which is correct. ये people development and environment से आया है आपका. Okay. Please try to answer. Okay, this is a difficult question. Let me share the answer. Okay, Shilpa. Volatile organic chemicals ये ज्यादातर ग्राउंड वाटर में मिले जाते हैं, सरफेस वाटर में कम मिलता है. ओके, सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. लेकिन जब हम ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं, सो VOCs आर नॉट द क्राइटेरियन पैरामीटर्स टू डिटरमाइन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी. सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो आपका करेक्ट ऑप्शन है 3. ओनली शिल्पा इज करेक्ट. Annie, did you get the picture clear? Is the picture clear? Okay, let's move to question number 43. For the introduction of the concept of total quality management in universities, which of the following will be considered helpful? हम TQM की बात कर रहे हैं यहाँ पे. TQM देखिए क्या है in the university. ये quality code है. Okay, that means continuous performance improvement. So जब हम concept of TQM की बात करते हैं in universities, which of the following will be considered helpful? Is it systems thinking? Is it participatory management? Is it rigorous admission procedures? SWOT, strength, weakness, opportunity, and challenge?
Introduction of skill development programs. Whenever we are talking about TQM in universities, which of the following are considered to be very, very useful? Yeah, Annie. Total quality management. Yes. Yeah, please try to answer. Okay, Shraddhanjali, Shweta, Ambika, Anusha. Yes, Shilpa and Annie, please try to answer. Okay, Shilpa, Anusha, Shweta, okay. Annie, please try to answer. Fine. So see, here in this particular question, systems thinking is a mandate for TQM. Okay, if the system, entire university does not think in a proper way, then it is very difficult. Annie, just a minute. Next है आपका, which factor is coming? Participatory management is very mandatory, very, very important. And the last is SWOT, strength, weakness, opportunity and challenge analysis. ये तीनों चीजें mandatory हैं for TQM in universities. So that comes to A, B and D only. Correct option is 1. Okay. ठीक है, let's move to question number 44. Very, very easy. I think the most easiest, no, second easiest. और एक क्वेश्चन आया था आपके स्क्वायर्स के ऊपर, राइट? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. दो लिस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स. एंड इधर आपको एग्जाम्पल दिया गया है. वी हैव टू मैच. चूज द करेक्ट आंसर. इनमें से प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर का मतलब क्या है? द नंबर इटसेल्फ एंड 1, ओनली 1 फैक्टर. इंटीजर्स में सब कुछ रहता है. ओके, ट्राई टू आंसर, आई देन एक्सप्लेन. यस, हड़बड़ी में मत आंसर कीजिए. ओके लुसना, डोंट रश एंड गिव योर आंसर्स प्लीज. प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ओके, राइट. इंटीजर्स क्या है? हमने बोला कि सब कुछ है वहां पे, माइनस एंड प्लस. सो -2, -1, 0, 1, 2. होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स, ऑलवेज रिमेंबर द लिस्ट starts from 0. So 0, 1, 2, 3.
and natural numbers where the list does not start from 0. That is the only difference between natural and whole number. So that comes to option number 2. Okay, fine, Shwetalina. Clear all of you? Yeah, Shwet, Sona. 45 question. Which one of the following ancient universities provided for the teaching of a specific subject? Vajranaya Buddhism, okay, along with other subjects. Is it Mithila University, Jagdala University, Nalanda University, Odantapuri University? Yeah, I have आपका higher education से. Sashwati का okay, that's good, correct. So here we are talking about a special subject which is taught in one of those universities. Vajrayana Buddhism. Okay. There are various types of Buddhism and Vajrayana Buddhism is one of it. So which university actually teaches? Okay, let me give you a certain brief. Now, this whenever we are talking about this Buddhism concept or Vajrayana Buddhism, it was founded by the famous Buddhist master Dzong Khapa. Okay, वो उस टाइम का मोस्ट पावरफुल स्कूल बन गया टिबेटियन बुद्धिज्म के, like of Tibetan Buddhism, जहां पे Gelug monks allied themselves with the Mongols, and the head of Gelug school is the Ganden Tripa, but its most influential member is Dalai Lama. अच्छा, कितने टाइप ऑफ बुद्धिज्म है? एक है आपका ट्रेडिशनल बुद्धिज्म एंड मॉडर्न बुद्धिज्म, ओके, और एक है आपका नाइकिया बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म एंड वज्रयाना बुद्धिज्म. नाउ okay, the answer to this question is Jagdala University. Jagdala University was set up by Pala King Rampala. 11th century में सेटअप किया गया था ये particular university in Varendra in North Bengal, now in Bangladesh. Tibetan sources had mentioned कि there are 5 ancient universities जिनमें जगदला भी included है, और 4 क्या है? नालंदा, उदंतापुरी, विक्रमशिला and सोमापुरा. According to Tibetan sources, the 5 ancient universities formed a network under state administration and ये पांचों के पांचों आपसी में linked थे. जगदला में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था इंक्लूडिंग संस्कृत, okay, but one of the special subject was Vajrayana Buddhism. Okay, कुछ और एक इंफॉर्मेशन है, सुबह सितारा कोशा, सीता रत्ना कोशा, ये बहुत ही अर्लीस्ट डेटेड एंथोलॉजी है संस्कृत वर्सेस के ऊपर. इट इज ऑल्सो कंपाइल्ड बाय अ बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड पोएट्री एंथोलॉजिस्ट विद्याकरा एट दिस यूनिवर्सिटी. जगदला यूनिवर्सिटी में ही संस्कृत का कुछ वर्सेस को कंपाइल किया गया था बाय विद्याकरा. बहुत सारे टिबेटियन सैक्रेड टेक्स्ट भी कंपोज हुए हैं और कॉपीड हुए हैं एट जगदला यूनिवर्सिटी. So based on this question, the answer to this question is number 2, Jagdala University. Okay, I can exactly show you the link. At the end of the this particular session, I'll show you from which link you can get more details about this question. Okay, let's move to comprehension, the most wanted and most lovable questions for all. Okay. Yes, Shilpa, the correct answer is Jagdala University. Fine. So read the given passage carefully and answer the questions that follow. The students who had taught reading comprehension, like जिन लोगों को हम पढ़ाए हैं, I clearly mentioned कि आप comprehension पढ़ने से पहले आपको questions पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब आप comprehension पढ़ रहे हो तब it won't be a difficult for you, at least दिमाग में आएगा, hit करेगा keyword.
So we will also go by that approach. ये है आपके सामने questions. In the social organist view, learning occurred through what? Okay, so let's just try to read the comprehension. आप लोगों को दिखाई दे रहा है passage? In the social organistic view, learning occurred through what? Okay, देखिए यहाँ पे, if the vision of the learner in the initial period was predominantly as an empty organism and in the next as an active organism, in the period that followed, it was a social organism. The beliefs regarding the nature of the learner in the first period drew heavily from the associationist view of the human being. ठीक है, प्रीडोमिनेंटली इनिशियल पीरियड में जो भी लर्नर है वो एक एम्प्टी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से आते हैं, एंड इन द नेक्स्ट पीरियड वो एक एक्टिव ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, एंड इन द पीरियड फॉलोड बाय दैट ही बिकम्स अ सोशल ऑर्गेनिज्म. इन द सेकंड फ्रॉम द गेस्टल्ट, तो जब एम्प्टी होते हैं तो एसोसिएशनिस्ट व्यू, जब वो एक्टिव होते हैं तो गेस्टल्ट एंड पर्सनलिस्टिक व्यू, एंड जब वो सोशल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, so they drew from the emerging social, psychological and group dynamic views. The child as learner as envisioned as a social organism, and learning was perceived as occurring through interpersonal actions and reactions. Each person in the classroom serving as a stimulus for every other person. Okay, जब बच्चा छोटा था तो वो विजन करता था कि मैं भी सोशल ऑर्गेनिज्म बनूं, एंड वो जो लर्न करता था दैट वाज परसीव्ड एज ऑकरिंग थ्रू डिफरेंट इंटरपर्सनल एक्शंस एंड रिएक्शंस. जो भी बच्चे क्लासरूम में बैठते थे वो ईच अदर के लिए स्टिम्युलस बनते थे. It is hard to overemphasize the impact on the classroom of the group climate concepts and studies by Lewin and his associates beginning in the late 1930s, which were given added cogency by the ideological issues of World War II. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ओवर एम्फसाइज किया गया था इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम ऑफ ग्रुप क्लाइमेट कॉन्सेप्ट्स, एंड जो भी स्टडीज हुए थे बाय ल्यूविन एंड हिज एसोसिएट्स इन द लेट 1930s, which were also added by the ideological issues of World War II. Innumerable बहुत सारे treaties, textbooks and programs were applied these ideas and findings to the classroom, and such terms as authoritarian, democratic and laissez-faire became for good or ill integral parts of the educational vocabulary. सारे नए वर्ड्स आ गए हमारे एजुकेशनल वोकैबुलरी के साथ ऐड हो गए. Experimenters in the learning laboratory became concerned with such previously unheard of matters as interpersonal cohesion. जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे in the learning laboratory वो बहुत ज्यादा concern हो गए with previously unheard matters. Okay, as interpersonal cohesion, small group process, teachers in the classroom, and with sociometric structure, group dynamics, so they became more and more concerned. बहुत से changes दिखने को मिला. Concomitant changes in the image of the ideal classroom could again be observed. अगर एक बच्चा primarily एक social organism होता तो उसके objectives of education should be primarily social in character. अगर एक बच्चा एंड इफ लर्निंग इज अ सोशल और ग्रुप प्रोसेस, जो भी लर्निंग पढ़ाया जाता है इट वुड हैव बीन अ सोशल और ग्रुप प्रोसेस, देन अ सर्कुलर और ग्रुप सेंटर्ड क्लासरूम वेयर एवरीवन फेसेस एवरीवन एल्स, ओके, इज द मोस्ट सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल इवन नेसेसरी लर्निंग एनवायरनमेंट, and this would have been a favorite image of the classroom. So basically they are talking about a child and the classroom context. So based on this question, we are going to do the first. In the social
organistic view, learning occurred through what? Okay. क्वेश्चन में कौन सही है या कौन सही डिफरेंस नहीं है कितने बड़े तो दूसरे जगह कहीं Okay, the correct answer to this question is option number 1. Okay, now where is it written? Second paragraph, second line. Okay, this part. In the socialistic organistic view, learning occurred through each person in the classroom is serving as a stimulus for every other person. So the correct answer is 46-1. Okay. Yeah. Sashwatika, Shilpa, all are correct. Let's move to 47th question. The author of the passage is in favor of the idea of vertical learning, laboratory learning, circular learning, teacher-focused learning. The author of the passage is in favor of the idea of Yes. Okay. The author of the passage is in favor of vertical learning, laboratory learning, circular learning, and teacher-focused learning. इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है आपको? Others, please try to answer. Okay, Ambika, Prakriti. Okay, please write in the chat box. Ambika, are you trying to say something? So please write it in the chat box.
Okay, Sashwatika, Preeti. See, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है, and if learning is a social or group process, then a circular or group centered classroom where everyone faces everyone else is the most sensible and practical, even necessary learning environment, and indeed became a favorite image of the classroom. So अगर हम ये sentences देखें, या शिल्पा, it's written in the last paragraph. Circular learning, the author is focusing on circular learning. 48 question, देखो, third para, third line. In the learning laboratory, the focus is shifted to production of textbooks, creation of educational vocabulary, democratization of the process, understanding group dynamics. We are talking about learning laboratory. Okay, the word learning laboratory is mentioned here. So the focus shifted to what? Is it production of textbooks? Is it creation of educational vocabulary? Is it democratization of the process? Or is it understanding group dynamics? Okay. Sona, Jeevan Bikash, Prakriti, Ambika, Preeti. Okay. Okay. See this line. Experimenters in the learning laboratory became concerned with such previously unheard matters as interpersonal cohesion, यहाँ पे mention नहीं है, small group processes mention नहीं है, teachers in the classroom with sociometric structure भी mention नहीं है, group dynamics mention है. So the correct answer is understanding group dynamics. या शाश्वतिका, absolutely correct. ठीक है? Okay. Let's move to question number 49. हम लोग 1 minute से ज्यादा, we are actually waiting for 2-3 minutes for a particular question. The first vision, yeah Shilpa, absolutely correct. The first vision of the child as a learner was, ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था. I think everyone can answer. The first vision of the child as a learner was personalistic, social, humanistic, or associationistic. The first vision of the child as a learner was
Okay. So शाश्वतिका नंबर 2. ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही था, स्टार्टिंग राइट. 3 पीरियड्स में एक बच्चा जाता है. पहला पीरियड था उसका एम्प्टी, दूसरा था एक्टिव एंड तीसरा था सोशल. एम्प्टी के टाइम पे बच्चा फर्स्ट विजन वाज एम्प्टी, सो एम्प्टी स्टार्टेड फ्रॉम एसोसिएनिस्ट. एक्टिव में सेकेंड पीरियड में वो गेस्टल्ट एंड पर्सनलिस्टिक व्यू में गया. And in the third, social view में वो psychological and group dynamic views में गया. So the question, the first vision of the child as a learner was associationistic. Option number 4 is correct. Last question of this set, management paper 1 set, which was held on 30/9/2020. The group climate of the classroom got reinforced by social issues, ideological issues, interpersonal issues, individual issues. देखो यहाँ पे ग्रुप क्लाइमेट की बात किए हैं. So got reinforced by what? reinforced आप बोल सकते हो, backed up बोल सकते हो, कोई और आके यहाँ पे ऐड किए बोल सकते हो. Anything you can use here. The group climate of the classroom got reinforced by, okay, Jeevan. या शिल्पा, सोना, अंबिका, प्रकृति, अनुषा, श्रद्धांजलि, प्रीति, yes, absolutely, all of you are correct. It's ideological issues. Okay, concept and studies by Lewin and his associates, beginning in the late 1930s, which were given added cogency, reinforced आप बोल सकते हो, by the ideological issues of World War II. Straight answer, yeah, Sashwatika, correct. So the correct answer is 50, number 2. So any questions? See, these are the links which I was saying. आप लोगों के फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 and 12 है, तो जिस लिंक से क्वेश्चंस लिया गया था, these are the links I have clearly shown. आपको ज्यादा डिटेल्स आपको इस लिंक से मिलेगा. Question number 27 and 31 is in your second video, part 2. You can go in the description also, the video links are given. तो क्वेश्चन नंबर 27 और 31 आप जाके देख सकते हो, एंड कौन से लिंक पे है वहां से आप ला सकते हो. एंड द लास्ट 45 इट्स इन पार्ट 3. टुडेज क्लास अबाउट दिस जगदला यूनिवर्सिटी एंड ओदंतपुरी नालंदा, उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है. सो यू कैन go and check from these links also. Okay, so any questions? The previous 2 links have already been given in the description box. Okay, once this is over, it would be provided, तो आप लोग जाके वहां से भी आप देख सकते हो, right? So any questions? And this method will continue. इसके बाद we will come up with one more set किसी subject का, चाहे commerce हो, education हो, computer science. Today we have computer science exam, so all the best to the computer science students. Tomorrow we have education and I think Hindi also in the tomorrow or next day. So all the best for the upcoming exams that are coming. Psychology or sociology, someone is also having. Sociology is also having the exam. So all the best to the students and we will be communicated. आगे चल के हम लोग दूसरा papers का भी detailed analysis इस तरह से ही करेंगे. Okay, so thank you.
Anusha, Shraddhanjali, Sona, Priti.